Hello friends, good evening. My name is Supriya Kumari. I am studying in 4th standard. Now let's learn science. Now let's learn in science about terrestrial plants. In science, let's learn about terrestrial plants. In terrestrial plants, let's learn about terrestrial plants. There are 5 types of terrestrial. Five types of terrestrial plants. But now I will only teach you 2. They are desert plants, plants in plains. Desert plants and plants in plains. Desert plants and plants in plain. Here, desert plants. Here, we learn desert plants, and here we learn now I am only teaching you only 2 because afterwards I will teach you 3. In the part 2 of terrestrial plants, I will teach you 3 more because there are 5. We have only completed 2 now. I will teach you this 3 in the part 2. Now about desert plants. Desert plants are cactus, acacia, date palm. Desert plants, cactus, acacia, and date palm. Desert, dry and hot. This is a desert, okay. This is a desert, very dry and hot. There is little rainfall or no rainfall in the desert. If you are thinking, then how these plants in the desert survive in the dry and hot without water? See, this is desert. See, in the desert, see the plants over here. Let's make see the plants. The plants. Okay, these plants in the sand, the roots of the plant in the soil, in the sand even, there is some water. It will the plant can absorb all the plant, all the water from that roots, and it will go to the plant if there is some water. Okay, like this they survive.
and some plants store the water in them. From that, they can live so many days without water because already they have water stored. Water stored. Now, this was about desert plants. They are cactus, acacia, and date palm. Okay, what are this? What are this? These are These are like a small thing. Okay, means it is made of a sand. Means when the storm came over there, they will remain in a place. How this is remained? Then that will be like this. Okay, that is this. Means when the so much of storm came, it became like this because all the sand came together and forms like this. Like this it will forms. Okay, this is like that. Next, this I taught you about desert plants, which are the cactus, acacia, and date palm. Of cactus, we can eat so many cactus. Okay, in so many cactus, inside there are fruits that can be eaten, but not all. Okay, but not in all, only in some. If you get any flowers or fruit in the cactus, please don't eat because it will be danger also. Only some cactuses fruit can be eaten, not all. Not all. Not all. Okay. This was about full desert plants. All about desert plants this was. And here, plants in plain. Let's look in a plain. The plants in plain are gulmohar, peepal, and shisham. The street trees are found in plants in plain. Maybe you have seen a peepal tree so much. Okay, and some have not, but they all have seen gulmohar tree, but they can't tell that which is gulmohar tree and which is not, which is other tree. They can't guess. Because there are thousands of trees in the world, more than 1,000. Okay, the gulmohar tree will be with so many flowers and it even shed their leaves. These three plants shed the leaves. These three plants also shed the leaves. Okay, like they are deciduous. Like how means they are deciduous. Okay, these are the deciduous trees found in the plain. Gulmohar tree, peepal tree, and shisham tree shed their leaves. Okay, they are like deciduous. How I told you, they are like deciduous trees. These three also. These three are even deciduous trees only. I will tell you the information that I think from my idea, the plain is full of deciduous trees. Let I find out and tell you in the part 2. Okay, so they shed the leaf. This was about the plants in plain and the deciduous. See, plants in plain are gulmohar, peepal, and shisham.
They shed the leaves like deciduous trees. They shed the leaves like deciduous trees. Cactus, acacia, date palm in desert plants. Gulmohar, people, shisham are plants in trees. Now I will tell you in Hindi. मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ओके, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब टोटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स 5 होते. तो 5 में मैंने सिर्फ अभी 2 बताया है, नेक्स्ट में बताऊंगी मैं. डेजर्ट प्लांट्स और प्लांट्स इन प्लेन्स. डेजर्ट प्लांट्स में कैक्टस आता है, एक अकासिया आता है, एक डेट पाम आता है. वो सब ट्रीज डेजर्ट प्लांट्स है, वो सब डेजर्ट का प्लांट्स है. ये सब ट्रीज सिर्फ डेजर्ट में मिलते हैं और ये सब डेजर्ट में मिलते हैं. तो डेजर्ट एक ड्राई एंड हॉट, मतलब बहुत वहाँ गर्मी रहता है और सूखी जगह है डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान. तो रेगिस्तान में कैसे जो प्लांट्स है ना, वो कैसे नहीं होते, बिकॉज वहां पर थोड़ा सा भी पानी ही नहीं रहता, वो ड्राई रहता है. तो कैसे वो रहते. तो देखिए, थोड़ा सा कभी एक एक बार वहां पर बारिश आता है या फिर बारिश नहीं आता. तो जब बारिश आता है तो वो बारिश सैंड के साथ मिल जाता है और जो प्लांट्स है वो सारा वाटर को ले लेती है. जब वो लेता है तो अपने अंदर पूरा वाटर को स्टोर करता है. पूरा वाटर को स्टोर करके रखता है. उससे वो बहुत दिन तक उसे यूज करता है, जिससे वो मरता नहीं है. ये था डेजर्ट प्लांट्स के बारे में. ऐसे ही वो सरवाइव करते हैं. अब यहाँ पर प्लांट्स इन प्लेन्स मतलब क्या है. प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लेन्स एक जगह होती है. ओके, वहां पर प्लांट्स कैसा होता है, ये है क्वेश्चन. तो गुलमोहर, पीपल और शीशम ट्री वहां पर रहते हैं. ये 3 ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्रीज है जो प्लेन में मिलते हैं. ये 3 ट्रीज का शेड द लीव्स. शेड द लीव्स मतलब जब स्प्रिंग सब आता है ना, स्प्रिंग गर्मी, वो जब वो आता है तो ये अपने लीव्स को छोड़ती है. पूरा वो टूट के गिरता है. उसे बोलते हैं शेड द लीव्स. मतलब वो शेड करते हैं लीव्स को, नीचे गिरता रहता है टूट के. उसे बोलते हैं शेड द लीव्स. सो ये भी डेसिडियोस के जैसा है. डेसिडियोस भी सेम शेड द लीव्स करता है. वो भी शेड करता है लीव्स को, मतलब लीव्स को तोड़ता है, अपने आप वो गिरते रहता है. ऐसे अपने आप वो सारे लीव्स गिरते रहते हैं. उस वैसा ट्रीज है गुलमोहर ट्री, पीपल ट्री और शीशम ट्री. ये तीनों ट्री सेम शेड करते हैं उनके लीव्स को, सेम डेसिडियोस की तरह. डेसिडियोस ट्री आता है एक अलग से. डेसिडियोस फॉरेस्ट ही आता है अलग से. उसमें सिर्फ सारा होता है ना, सारा प्लांट्स, ट्रीज, वो सब लीव्स को शेड करते. शेड मतलब छोड़ते हैं. वो सब अपने आप गिरते रहता है, उसको बोलते हैं शेड द लीव्स. तो वो अपने लीव्स को शेड करते हैं डेसिडियोस ट्री. शेड द लीव्स डेसिडियोस की जैसा है. डेसिडियोस शेड द लीव्स है. ओके, तो ये था डेजर्ट प्लांट एंड प्लांट्स इन प्लेन के बारे में. डेजर्ट प्लांट एंड प्लांट्स इन प्लेन. यहाँ पर टोटली 5 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है डेजर्ट प्लांट, और यहाँ पर प्लांट्स इन प्लेन, और 3 है. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो. So there are 2
First, I have only taught you two terrestrial plants. They are desert plants, and here plants in plains, desert plant are cactus acacia. You remember this acacia? मतलब डेजर्ट प्लांट और प्लांट्स इन प्लेन, तो अकासिया को बोलने के लिए भूलना नहीं, अकासिया, और स्पेलिंग ऐसा ए अकासिया। सो ये सब अभी खत्म हुआ। सो बाय बाय।